is a way of apprehending reality. Uh, Taking the session would be Gauhar Raza sir, so I request him to kindly take over. Hmm? Yeah, yeah. Okay. Thank you very much. It's always difficult to begin talking about science because in probably today's world there's nothing like science. Science expresses itself through disciplines, sub-disciplines, and areas of expertise. So it's always very difficult to define what science is all about. And I've talked about science and given this lecture a large number of times, and here is Moina sitting, maybe she's going to hear the same things nth time. But it's very important for me to keep on talking about what is science, because it's not only difficult to define what is science, but people generally are very scared of science. The moment you say science, and people switch off immediately because it's something that is to be talked about only by scientists, among scientists, within laboratories, etc. And all kinds of images come to your mind when you talk about science. So let me not talk about science then. Let me try to tell you a story. Right. Can you imagine that there was a time when there was nothing? And when I say nothing, then I mean that there was no time, there was no space, there was no heat, there was nothing you could call cold, no light, no darkness. Can you think of this kind of situation? It's very difficult to even imagine. ये सोचना भी सहल नहीं है कि वक्त ऐसा भी था कभी जब ये वक्त पैदा नहीं हुआ था. Now if you close your eyes and think about it, it will still be as difficult as when you think about it. But somehow, somewhere there was a small, dimensionless, primordial atom. And something happened, that there was an explosion that took place. There was energy which was released. Intense temperatures, very high temperatures. And then this energy started expanding. So 10 raised to the power minus 40 seconds or something. There was something happening. With very high temperatures to something mind-boggling like 10 raised to the power 30 degrees centigrade or something. The particles created matter and antimatter. And continuous annihilation of matter and antimatter was going on. But somehow, in this tug of war between matter and antimatter, one particle somewhere won the war, this tug of war. And one more particle, as compared to antimatter, won this war. The expansion kept on taking place, the temperatures went down a little bit, and more particles were created.
And it so happened that the number of matter particles kept on increasing and becoming more and more complex. So you have neutrons, you have protons, etc., created. And this expansion is taking place. Then somewhere around 5 billion years, these particles got together. And stars were born. These stars came together and galaxies were formed. Remember that initially time was created and matter was created. It expanded, it came together, and galaxies were formed. Millions and millions of galaxies. And all these galaxies kept on expanding, going away from each other. And then there was a galaxy created, which we know as Milky Way. On the periphery of this Milky Way, there was a tiny little shining star was created. And around this star, there were little, very minute balls were created, which started revolving around this tiny little star. And among these little balls, there was one beautiful ball which was different from others. The color of this ball was bluish green. This was the ball on which there was water. And out of water, somehow something happened. We don't know the details, but life was created. Life evolved, and over a period of time, it took many shapes. On this planet, there was water and there were continents created. On this continent, on one of the continents, there was a country created. And on the country, we created large number of cities. Among them, there was one very tiny one. And within that city, there was a school created. And in that school, there was a hall created. And in that hall, somehow, some human beings got together and thought that we should hold a workshop for 2 days. How much time has elapsed? 13.75 billion years. So this event today is especially important because we are celebrating 13.75 billion years, which nature has taken us to come together. So if, as a scientist, you ask me, every moment should be cherished because nature has taken 13.75 billion years to create that moment. Now, our entire history of civilization
is a tiny dot, very, very small dot on this time scale. It's only 8,000 years old. And we have created so much. During this 8,000 years, especially knowledge and ways of seeing this reality, that it's in itself mind-boggling. We don't have any neighbors that we know of. Scientists tell us that the probability of having intelligent life in this cosmos is very, very high. And probably more intelligent than us is also very high. But we have been sending signals, and till today, nobody has said, yeah, hum bhi hain yahan par, chalo, milte hain, haath milate hain. No, it has not happened as of yet. Now let me go back to Africa. And I cannot show you the maps, etc. But let's take scientists as the people who have worked on the big problem that how did we become human beings, and believe that we have come out of Africa. Right? So when we were living in Africa about 2 million years ago, can you imagine how we were living? We've been taught a lot about it, but it's again very difficult to imagine कि वहाँ हम कैसे रह रहे थे, पेड़ों के ऊपर, कभी नीचे, बाइपेडल हो गए थे, दौड़ते थे, हम औरों और जानवरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा देर तक दौड़ सकते थे. That is how we have survived. मेरा मानना यह है कि उस वक्त अगर हम केव्स में रह रहे थे या पहाड़ों पे रह रहे थे, तो हमारी ज़रूरतें क्या? Can somebody help me? कि उस वक्त जब हम अफ्रीका में थे तो हमारी ज़रूरतें क्या थी? कुर्सी, हॉल, शहर, कार, ये हमारी ज़रूरत नहीं थी. So can somebody help me? कि क्या ज़रूरतें रही होंगी हमारी when we were in Africa? 3 वक्त का खाना, शायद 4 वक्त का खाना, अभी 3 वक्त का हो गया है ज़्यादातर. और शेल्टर, यस, खाना, शेल्टर और tools and weapons. टूल्स एंड वेपन्स अभी नहीं. Not weapons. अभी नहीं. Clothing. Oxygen. रीप्रोक्रिएशन, 3 बेसिक ज़रूरतें हैं किसी भी जानवर की, तो हमारी भी यही रही. और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन, जैसे जानवर एक दूसरे के साथ करते हैं. इसके अलावा हमारी ज़रूरतें नहीं. Somehow, around 2 billion years ago, 4 से 2 million years ago, हमारा ब्रेन साइज बढ़ गया. Suddenly, that is the evidence. From about 400 cc to 600 cc, sudden increase है. और इस इंक्रीज की वजह से हमने शायद कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया as compared to other living beings, especially primates. इस वक्त मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये पता करूं कि इंसान ने सवाल कब पूछने शुरू किए. When did human beings start asking questions? And that is directly related to another question, that do other animals ask questions? And try to find out answer. I haven't been able to
fine answer to this question, that when did we start asking question. मैंने कॉग्निटिव रिसर्च के एरिया को काफ़ी छाना, पिलियो ऑन्टोलॉजी वगैरह वगैरह, इन सबको जानने की कोशिश की. इसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है, शायद कभी मिल जाए. बहरहाल, at some point of time we started asking questions. तो अगर शुरुआत में हमने क्वेश्चंस पूछे होंगे तो वो भी हमारी ज़रूरतों के साथ रिलेटेड होंगे. हमारी 3 मेजर ज़रूरतें हैं और उसी के साथ रिलेटेड होंगे. माइग्रेशन और जानवरों का जैसे होता है वैसे ही हमारा हुआ होगा. अगर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी या शेल्टर, बोथ ऑफ देम आर सिक्योरिटी. ये सिक्योरिटी अगर थ्रेटेंड है तो हमने जगह छोड़ी और कहीं और चले गए, और हम वापस आने के लिए नहीं गए. जब गए छोड़ के जगह तो फिर चलते ही चले गए. तब हमने इस धरती को कैसे देखा होगा, इस कॉस्मोस को कैसे देखा होगा. ऑल द लिटरेचर टेल अस कि धरती हमको, the earth was flat, जो दिखाई दे रहा है हमारे सामने. कहीं पहाड़ हैं, कहीं ऊंचा है, नीचा है, लेकिन अगर ऊंची जगह के ऊपर चले जाएं तो the earth is flat. And till 17th century in Chinese civilization, earth remained flat and square. हमारी सभ्यता में, our civilization, the earth was flat but round. There are references जहाँ उसको round कहने की कोशिश की है, लेकिन वो round not like a ball but probably like a coin, flat. और हमारे यहाँ ये भी है कि स्टोरी के एक के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी फ्लैट अर्थ्स हैं, एक नहीं. सो हमारे लिए ये मॉडल अर्थ का और कॉस्मोस का काफी था. क्योंकि जब हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो इतना ही याद रखना है कि वापस केव में या उस जगह पे जहां सिक्योरिटी है वहां वापस लौट आए. इससे ज्यादा जरूरत नहीं है. तो इसमें इससे ज्यादा भी जरूरत नहीं है कि दिन कब निकलता है, रात कब निकलती है. दिन शिकार करने के लिए वगैरह वगैरह, और रात को बचने की जरूरत है, स्पेशली हाइनास. आई डोंट नो वेदर आई हैव टाइम टू टेल यू स्टोरीज, पर देयर इज अ प्लेस इन साउथ अफ्रीका, मारूपेंग के नाम से. वहाँ नीचे केव्स हैं, जिन केव्स में मैं गया हूँ. और वहाँ पर जो भागते हुए इंसान शिकार की तलाश में या प्रेडेटर से बचने के लिए वो नीचे गिर जाते थे और नीचे कैल्सिफिकेशन हो जाता था. तो कैल्सिफिकेशन की वजह से वहां पर काफी फॉसिल्स मिले ह्यूमन बींग्स के. मिसेस प्लेस इज अ फॉसिल जिसकी सिक्योरिटी वही है जो वहाँ के प्रेसिडेंट की है. And when I held that, because of one of my friends, in my hand, that skull, then a current went down my spine. Oh my God, what am I holding? Precious cheese. But much more fascinating for me were fossils of brain and children's brain. छोटे छोटे वो कई थे उनके म्यूजियम में. Calcification of brain has very 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 low probability. वो बच जाना, because वो टिश्यूज जो हैं वो सबसे नर्म टिश्यूज हैं. They disintegrate very fast. बहरहाल, because hyenas cracked open the skull of children,
तो वो गिरने की वजह से उनका कैल्सिफिकेशन हो गया. दैट्स द थियरी. सो हाइनास से हम बचते. वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन थे. ओनली 5 minutes. Okay. Right? I have to tell you a story in fast forward mode now. So, you have a situation where you are asking question about cosmos. तो स्टोरी हमारी ये है कि सूरज चांद सितारे निकले, अर्थ फ्लैट है, इधर से उधर गए और फिर वो घूम के ये पानी में नीचे से नहा के अगले दिन निकल आए. Right? But as we developed, our society became more and more complex. And once society became more and more complex, our questions also became complex. And we realized कि सन तो सही उस जगह से हमेशा नहीं निकला. अब हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जरूरत है when we settle down. घर बनाना है, कैनाल बनाना है, अगली जनरेशन्स तक अपनी बात पहुंचाना है, तो हमारी लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट, ये वो somewhere in Mesopotamia started developing. And in this process we realized कि पुराना मॉडल जो है वो sufficient नहीं है to explain new data. Right? I'm not getting into details. पर अब अर्थ राउंड होना शुरू हो गई. बिकॉज फ्लैट नहीं रह सकती, क्योंकि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि सूरज और चांद तारे चाइना में उसी वक्त कहीं और से निकल रहे हैं और मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, रोम में कहीं और से निकल रहे हैं. अगर एक जगह से निकल रहे होते, अगर फ्लैट होती अर्थ, तो एक ही जगह से निकलते हुए एक ही वक्त में दिखाई देते. ऐसा नहीं हो रहा. So how do you deal with this new data that has come? So earth becomes round. But in the center of universe, and Aristotle, a great mind, gives you a model which is called Ptolemy's model, जहाँ बहुत सारे celestial spheres हैं, एक God है इन celestial spheres को वो चला रहा है. So earth is in the center of the universe and you have celestial spheres. पर इसमें प्रॉब्लम शुरू हो गई. एक आदमी था बहुत ही पायस किस्म का, उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि God has created human beings as per Bible. तो God क्रिएट करेगा और वो अपने क्रिएशन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा. This can't happen. हमें गॉड के चारों तरफ चक्कर लगाना चाहिए. एंड दिस फेलो केम टू कंक्लूजन कि भाई नहीं, धरती जो है वो बीच में नहीं, इट्स नॉट इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स. तो अब धरती ने सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना, हीलियोसेंट्रिक थियरी. बट दिस वाज आल्सो चैलेंज्ड. इसमें बहुत सारी परेशानियां. Give me 5 minutes. और वैसे बोर हो गए हो तो अभी बंद कर देते. ऐसा तो नहीं है सो गए, कहानी सुनते सुनते हम ही सो गए, दास्तां कहते कहते. So there was a problem now. अब तक गॉड चला रहा था पूरे यूनिवर्स को, राइट? वहां बैठा हुआ कहीं दूर. लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर धरती सेंटर में नहीं है और ये सेलेस्टियल स्फीयर्स नहीं हैं, आसमान ही नहीं बचे, तो ये सब कुछ कैसे? व्हाट इज होल्डिंग इट? एंड हियर कम्स अ फेलो. साइंटिस्ट बहुत ही गड़बड़ लोग होते हैं. उसने एक छोटी सी इक्वेशन दी, एंड आई कंसीडर दिस एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल equations in science. All of us have read this equation. Maybe you don't remember it, but all of you have read this equation. G is equal to m1 into m2 by r square. यहाँ पे 4 alphabets हैं, right? Gravitational force is equal to mass of body 1
multiplied by body 2 divided by the distance between. Now, this changed completely everything. Now from the elementary particle and their behavior to the entire cosmos and heavenly bodies, you could explain using this equation how they are going to behave. You don't require God now. अब God जो है वो हमारी material life से explanation से बाहर हो गया. इससे पहले तक पत्ता भी खड़कता था तो खुदा की मर्जी से खड़कता था, और मुझे नहीं मालूम खुदा क्यों इतना इंटरेस्टेड पत्ते खड़काने में होता है, लेकिन ऐसा होता था. पर अब G is equal to m1 into m2 by r square से ये सब कुछ एक्सप्लेन हो सकता है. लेकिन साइंटिस्ट फिर बेवकूफ लोग होते, यहाँ भी नहीं रुके. उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इकट्ठा है तो m1 into m2 by r square की वजह से है, तो फिर सब एक जगह होगा, स्टैटिक यूनिवर्स होगा नहीं. एक साहब हबल आए, उन्होंने कहा कि ये ऐसा है नहीं, सारी की सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही. The universe is expanding. Again there was this problem कि क्या करें, ये कैसे. तो कहा कि किसी न किसी एक वक्त के ऊपर वो एक किसी जगह के ऊपर. And that is how we came to believe in theory of Big Bang. Now I've cut short a lot of details, but why did I tell you this story? I never talked about what is science. I never talked about what is scientific temper, looking at reality, etc., etc. The simple reason was that there are many ways of configuring reality. You can develop two broad categories. A category of science, which is continuous exploration of this material world. And then you have religious explanations of this entire reality. In science, you keep on asking the same question. What is this cosmos? How it's come about? What its shape? This is the question that I began with. But every time we asked the same question, we got a different answer. It was flat, it was round, it was in the center of universe. Universe is static, universe is expanding. This is what science is all about. That you ask the same question and then based on data and theories get a different answer. Now just 2 minutes. In science, when somebody says कि मैंने पता किया है m1 into m2 स्क्वायर कितनी ज़बरदस्त इक्वेशन है, तो मुझसे क्या कहेंगे आप? ये तो पहले ही पता कर चुके न्यूटन साहब. लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन में ये कहूँ कि इट इज़ अ रॉन्ग इक्वेशन बिकॉज न्यूटन फॉरगॉट टू पुट अ कांस्टेंट समवेयर, m1 into m2 by r square plus c होना चाहिए था, and I prove it कि C होना चाहिए था, तो क्या होगा कल को मेरे साथ? I'll get Nobel Prize, right? So the moment I prove Newton wrong, it will be celebrated all over the world. If I say E is equal to mc square equation में Einstein गलत थे, कुछ और ऐड कर दिया मैंने उसमें. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि रामचंद्र जी हैदराबाद में पैदा हुए थे, अयोध्या में नहीं हुए थे, तो मेरे साथ क्या होगा? अगर मैं ये कहूं कि मोहम्मद साहब रुके नहीं थे ऊपर जाते हुए जब उनकी मीटिंग थी अल्लाह मियां से, तो चांद के ऊपर, या चांद को 2 टुकड़ों में उन्होंने नहीं किया था, तो क्या करेंगे मुसलमान मेरे साथ? या अगर मैं ये कहूँ कि क्राइस्ट जो थे वो MBBS पास करके आए थे और बहुत अच्छे डॉक्टर थे, वो कुछ मिरेकल और वो सब नहीं था उनके, तो क्या करेंगे?
Christians मेरे साथ. So in religion, any change is not allowed. It's frozen knowledge. It's frozen way of looking at reality. Whereas science is a dynamic way of looking at reality. There are many other factors which one can talk about, but I'm cutting it short again. And in the end, I just want to say that knowledge keeps on generating even in precarious situations. People keep on asking questions and they're very, very creative. And this creativity of those sections of society is crushed with very heavy hand. And people like you and me keep on talking about episodes where we think that the creativity of people who are very, very ordinary, and most of the scientists were very ordinary people on the ladder of economic pyramid, we keep on asserting कि नहीं, सिर्फ multinationals creative नहीं हैं, नए चीज़ों के साथ, नए ideas के साथ नहीं आ रहे हैं, बल्कि ordinary लोग ही knowledge generate करते हैं. And some of us have come together across the world, Africa, Egypt, Turkey, France, who are looking at this problem that when precarious situations, when human beings are put under precarious situations, how does it affect knowledge generation? I hope that we will collaborate at some point of time and be a part of that bigger project. Thank you very much. क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचा ना. क्वेश्चन से मैं घबराता भी बहुत हूँ क्योंकि आप लोग कोई मुश्किल सवाल पूछ लेंगे फिर मैं फेल हो जाऊंगा. एक सवाल है, मैं तकरीबन 20 साल से किसी को पूछना चाहा, यही सही मौका आखिरी मिला. Is it possible theoretically, let's say when we have a new moon, is it possible for me to flash a light from Earth and light up the moon? Is it theoretically possible? Yes, it's definitely possible. But the laser beam that they are trying to create, again for multinationals, the idea is that they will light up the moon and write somewhere Nike or something. Right? So that is driving the research. That is what they are trying. And these are serious projects. Because वहाँ अगर एडवर्टाइजमेंट है तो फिर कहीं और जरूरत नहीं. Thank you. Yeah, please. So this was a question actually about the last part, which you just left angling. Because of paucity of time. But I want to kind of hear more, especially about this statement that you make, when people are in precarious situation, the kind of that knowledge that they produce is different. So, No, I didn't say different. I say human beings are creative. And even in precarious situation, they remain creative and create a lot of things, including knowledge. Not only technology, they do create technology, but they also create knowledge. And this knowledge is not acknowledged by the larger society. And most of the time, the structure crushes it with intention of crushing this creativity itself. See, when you say कि एक आदमी है, उसने अपनी झुग्गी झोपड़ी के अंदर
एक होल कर लिया और उसके अंदर पानी भर के बॉटल लगा ली, सो जो इज लिट अप ड्यूरिंग द डे। और किसी आदमी के पास चप्पलें नहीं थी, उसने अपनी चप्पलों की जगह के ऊपर एक बॉटल बनाई और लगा ली। सो एट वन लेवल इट्स रोमांटिसाइजेशन कि हाँ जी ये बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है, बट इसमें क्रिएटिविटी तो है ही, उससे यू कांट डिनाई कि क्रिएटिव नहीं था वो आदमी जिसने चप्पल बॉटल से बना करके और उसको पहनना शुरू कर दिया। पर जो मल्टीनेशनल्स हैं, जब जुगाड़ बनता है हिंदुस्तान में, तो पूरे तंत्र के साथ विद हेवी हैंड दे कम एंड से कि हम जुगाड़ को नहीं चलने देंगे। जुगाड़ इज दैट, वो उसमें लगा करके एक इंजन लगा करके और फट्टे के ऊपर वो शुरू हो जाते हैं ना। उसके अंदर कभी ये देखने की कोशिश नहीं की गई, बातें बहुत हुई कि उसके अंदर कितने और इनोवेशन किए उसने। So I am not saying it's different knowledge, because this question I have not dealt with कि क्या difference है दोनों। Definitely difference होगा इसके अंदर, लेकिन इसको क्रश करने की जो पूरी कोशिश होती है वो भी बहुत जबरदस्त